बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So we are here to find out what how to solve Assalamu alaikum dear students. We'll start inshallah very soon. I am waiting for some students to join. As soon as they join we'll start. तो ऐसा है कि आप यकीनन एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छी कर रहे होंगे। और ये भी है साथ साथ कि अगर आपने नम्स का एमडी कैट दिया था और उसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है खुदा न खास्ता, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। नम्स का टेस्ट जाहिर है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एमडी कैट। तो आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है कि आपने देखा कि किस तरीके से आपको जो एमसीक्यूज़ है उनको अटेम्प्ट करना होता है विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, और उस टाइम लिमिट के दौरान आपने अटेम्प्ट किया और आपने जो भी स्कोर अचीव किया, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप ये फोकस करें कि अब आपने क्या करना है। आपको ये करना है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अपना एमडी कैट जो है उसको पास आउट करना है। तो मैं ये अब करने लगा हूं आपके लिए कि जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास हैं, उनका एक फास्ट रिवीजन, ताकि तेजी के साथ हम उन्हें समझ लें कि वो टॉपिक्स हैं क्या। और जब हम वो समझ लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जाएंगे, फिर हम एमसीक्यूज लेंगे। वो एमसीक्यूज जो या तो पास्ट पेपर्स के होंगे और या फिर वो ऐसे होंगे कि जो बहुत ज्यादा हाईली उनकी परसेंटेज होगी कि वो एग्जाम में आए। इन माय ओपिनियन, जो मेरी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि यार वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो एमसीक्यूज मैंने आपको फिर करवाने हैं इंशाल्लाह। और उसके दो वेज हैं, या तो हम यहीं के यहीं इनको साथ साथ करते जाएंगे, या अगर हम देखेंगे किस तरीके से फिर हम आगे चलते हैं। अगर ये थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा हुआ, टाइम टेकिंग ज्यादा हुआ, तो फिर आपको याद है जिस तरीके से हमारी वो 36x36 सीरीज चल रही है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और वहीं पर उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि उसको लाइव भी सॉल्व कर लें, यानी आप उसमें मेरे साथ हो, मैं सॉल्व करता जाऊं और आप देखते भी जाएं, पूछते भी जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको हम पहले से बनाकर और फिर आपको सेंड कर दें कि भाई ये जिस तरह से पहले वो सिलसिला चल रहा है वही सिलसिला चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर। अच्छा, अब एक से इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जहन में ये होगा कि हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट जो है, मैंने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट क्यों नहीं किया? आपको क्या फील हो रहा है कि मैंने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट क्यों नहीं किया? मैंने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ चुका और बहुत सारे बच्चे उसको करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाले यूनिट्स है ना, ये ज्यादा मुश्किल भी हैं। मुश्किल मतलब बच्चों को महसूस होते हैं कि मुश्किल है, और इनकी प्रैक्टिस भी उनके पास कम है।
तो मैंने इसे रिवर्स साइड में शुरू किया है कि पहले लास्ट और फिर फर्स्ट की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह, करेंगे सबको कवर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और 15 लेक्चर्स का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह 15 लेक्चर्स के अंदर हम सारे टॉपिक्स को दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे, और जो भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह, और सारी डिफिकल्टीज को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी डिफिकल्टीज आपके एंड पर हैं वो आपको मालूम है, जाहिर है मुझे नहीं पता, तो वो आप मुझसे शेयर करते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करता जाऊंगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये टेस्ट आपके बहुत सारे बहन भाई, आपके दोस्त पहले भी क्लियर करते रहे हैं, आइंदा भी क्लियर करेंगे, आप भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। कोई ये आसमानी वो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मुश्किल बात हो जाएगी और कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, उसको हाउ टू अप्लाई ये पता आपको होना चाहिए, देन इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई की कंपोजिशन क्या है? तो ये एक तस्वीर आपके सामने थोड़ी सी बनी हुई है, इसको मैं फिलहाल छोड़कर उस तरफ वो वाली तस्वीर बनाता हूं जो आप बचपन से देखते आए हो। बचपन से आप कौन सी तस्वीर देखते आए हो? आप देखते आए हो जी ये तस्वीर, ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के गिर्द ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही है क्या? अब मेरा पहला सवाल यहां से आता है कि ये जो ये है, ये मैंने क्या बनाया है? मैंने ये आपसे पूछना है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बाउंड्री है, ये वाली है ब्लैक वाली, ये सर्किल, क्या ये वाकई ऐसे ही कोई बाउंड्री है रियल में, या ये कुछ और है? आपका क्या ओपिनियन है? सोच लें, आप सोचकर मुझे जवाब देना चाहें तो जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी देना चाहें तो परवाह नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में उस जवाब को जरूर रख लें कि आपका क्या ख्याल है, क्या ये वही है, यानी ये बाउंड्री है, या ये बाउंड्री लेस है, बाउंड्री नहीं है इसकी कोई। ठीक है, तो आपने ये पता करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जब आप बात करते हो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे प्लैनेट्स का सिस्टम है, उसके बारे में जब आप बात करते हो तो आप कहते हो सेंटर में सन है, उसके गिर्द सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी जो रिवॉल्विंग है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में है। और वो ऑर्बिट्स कहां होते हैं? वो ऑर्बिट्स आप बनाकर दिखाते हो, आप कहते हो लाइक सपोज ये कह रहे हो आप कि यार ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी अर्थ के सॉरी ये हमारा सन है, और ये हमारे सन के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर मुख्तलिफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ है, नेपच्यून है, यूरेनस है, जुपिटर है, ये सब मार्स है, सब इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बनाते हो। जबकि अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर आप ऊपर देखो तो क्या आपको कोई दायरा नजर आता है आसमान में? कोई सर्कल नजर आता है? इज देयर एनी सर्कल? मेरा ख्याल है कि सबका जवाब यही होगा कि कोई भी सर्कल हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, अगर तो आपको कोई सर्कल नजर नहीं आता, इफ देयर इज नो सर्कल ओवर देयर, तो दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इनका कोई, ये इमेजिनरी है। ये क्या है एक्चुअली? दिस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब इसी तरह यहां आ जाए, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसकी कोई रियल बाउंड्री नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक जस्ट लाइक क्लाउड है। दिस क्लाउड हैज ट्रैप्ड दीज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये क्लाउड है, इसने कैप्चर किया हुआ है न्यूट्रॉन्स को भी और प्रोटॉन्स को भी। अब न्यूट्रॉन मैंने ब्लू में शो किए हैं और प्रोटॉन मैंने प्लस साइन के साथ शो किए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या हो रहा है? हम, आपको याद रहना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियस के गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहा है? इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं जनाब इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? ये, अब ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इसी तरह आप आ जाएं अगले ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करेगा, यानी ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये ऑर्बिट्स भी क्या है? ये लाइनें हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है ना, ये हमने इमेजिन किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है। तो बात क्या बनी? बात ये बनी कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट विच इज
known as nucleus, which consists of both neutrons and protons, whereas the electron revolves around that central part in different orbits. के एल एम एन ओ पी ये डिपेंड करेगा, हम बाद में इस पर बात करते हैं। अब क्या है कि हम ये कहते हैं सेकंड पॉइंट कि नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम लाइज इन द न्यूक्लियस। व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि प्रोटॉन्स आर 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स हैवियर होते हैं प्रोटॉन। तो एक तरफ 1836 केजी हो, एक तरफ 1 केजी हो, तो 1 केजी उसके सामने ऐसा होगा जैसे नेग्लिजिबल। दैट्स वाई हम कहते हैं कि यार हमारा जितने का सारा मास है एटम का, वो लाई कर रहा है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारी दूसरी बात हो गई। न्यूक्लियस में कौन कौन बैठा हुआ है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। यहां तक अगर आपको कोई इश्यू है तो मुझसे पूछ लीजिए। और इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस कौन सी हैं? वो है कूलम्स फोर्स, और दूसरी कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये इसी से आपका क्या बनेगा? बोहर्स थ्योरी बनेगी। बोहर वाले जो इक्वेशंस हैं वो ड्राइव होंगे। लेकिन हम आज जो है वो इस रूट पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम आगे जाएंगे और हम रेडियो एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल पहले आप यहां तक समझ लीजिए। मैं आपको ये जो टॉपिक करा रहा हूं ये है 16 चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं ये है 16, यूनिट नंबर 16, और यहां लिख लेते हैं हम इसको न्यूक्लियर फिजिक्स। सीरियल नंबर है इसका 16। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की ये पहली बेसिक जो पहला इसका हिस्सा है वो ये मैंने आपके सामने कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि अगर ये न्यूक्लियर फिजिक्स है तो मुझे कोई बताएगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब, न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों कहा गया है इसको? जो रेडियो एक्टिविटी या जो रेडिएशन है वो किसके साथ रिलेवेंट है? क्या वो न्यूक्लियस के साथ रिलेवेंट है या वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ रिलेटेड है? ये जरा मुझे कोई बताए प्लीज। रेडियो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस और द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। यस प्लीज। This is related to the nucleus of the atom. Radioactivity. Now, what is radioactivity? The whole mass of the atom lies in the nucleus. Nucleus consists of proton and neutron, and electrons revolve around the nucleus. So this is till this point. Then the next one is we have to find out what is proton, what is neutron, and what is electron. We all know that proton is a positively charged particle, electron is negatively charged particle, and neutron is neutral, means it has no charge. Okay, the electron revolves around the nucleus in the orbits, whereas the proton resides in the nucleus, which is the simplest of the atom. So your answer must be hydrogen. Why? Because hydrogen consists of only
one proton and one electron which revolves around the nucleus. This is hydrogen. One proton, and this is lying in the nucleus, and one electron revolves around it. Okay, this is hydrogen, 1H1. This is the way to write out the element, 1H1. The bottom one gives you the atomic number and the top one gives you the mass number. This is what? This is atomic number. Atomic number. And this is what? Atomic mass or mass number. Atomic number is defined as the number of electrons or number of protons in an atom. Whereas atomic mass is defined as number of neutrons and protons in an atom. Okay? Atomic number is denoted by Z, whereas atomic mass is denoted by A. So when we talk about, say, carbon, carbon is 612. Means what? Carbon contains how many atoms, how many electrons? Atomic number is 6. So 6 electrons. As the number of electron is similar to the number of proton, therefore it also has 6 protons. And when you talk about this atomic mass, this is 12, and it is the combination of number of neutrons and protons. So 12 minus 6 will be 6. So number of protons, neutrons is also 6. This is carbon atom. So do you have any questions at this point, or we move further? Yes, hurry up. Yes, do you have any question? No. If no, then we'll move further. Actually, we have to find out the radioactivity. What is radioactivity? So we'll move in that direction. We have to find out radioactivity.
Yes, I was quiet because of Azan. So let's move further. Radioactivity. Now, what is radioactivity? Radioactivity is the process in which the elements with atomic number greater than 82. Actually, the elements with atomic number greater than 82 are unstable. They disintegrate spontaneously by giving out different radiations, and these radiations are recognized as alpha, beta, and gamma radiations. They disintegrate spontaneously. Spontaneously means what? खुद ब खुद टूट जाते हैं, कुछ भी उनको करने की जरूरत नहीं है। 82 से जो बड़े होते हैं वो खुद टूट जाते हैं, टूट कर क्या करते हैं, मुख्तलिफ रेडिएशंस देते हैं और रेडिएशंस देकर स्टेबल हो जाते हैं। अब वो ये रेडिएशंस क्यों देते हैं, वो स्टेबल क्यों होना चाहते हैं? याद रखो हमेशा, जिस तरह इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी हो, उसी तरह एटम्स की भी ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हों। और वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? जब भी उनके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है या एक्सेस ऑफ पार्टिकल हो जाता है तो उसे एमिट आउट कर देते हैं, और एमिट आउट करके क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये रैंडम प्रोसेस है, ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है। कोई एलिमेंट जल्दी रेडिएशन देता है, कुछ देर से देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा देर से देते हैं, ये डिपेंड करता है, ये हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर हो क्या रहा है, रेडियो एक्टिविटी में कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और उन पार्टिकल्स जो हैं उनका नेचर क्या है। यानी as I told you that we found alpha, beta and gamma particles as radioactive particles. So radioactivity जो है, जब वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट ब्रेक होगा तो मुख्तलिफ रेडिएशंस देगा, और वो रेडिएशंस अल्फा, बीटा, गामा होंगी। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका मिल जाए कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो किस किस तरह की और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट पर हम एक टेबल बना लेते हैं, ये टेबल के अंदर यहां इसकी ले लेते हैं प्रॉपर्टीज, और यहां हम ले लेंगे पार्टिकल्स अल्फा, बीटा, गामा, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज। Alpha is positively charged, beta is negatively charged, and gamma has no charge. Okay. Number 2, resemblance. Alpha resembles with helium nuclei. This resembles with electron, or it may be a positron, and this is electromagnetic radiation. Its constituents two protons and two neutrons. Its constituent is either electron or positron, and it consists of gamma ray photons. Now symbol, as we have there, alpha 2 4, atomic mass is 4, atomic number is 2, or it can also be represented by helium nuclei 2,
4. I am saying again and again helium nuclei, not helium atom. Why? Because helium atom consists of electrons also. Here we don't have any electron. Here we have only protons and neutrons. So this is its symbol, whereas the symbol of this one, for electron we have atomic number is 1 and atomic mass is 0. For electron this is -1 and for positron this is like this. These are the two symbols. And for gamma ray the symbol is only energy. Gamma means energy. Right? Now come to the next one. Ionizing power. Ionizing power of alpha is very high. That of beta is medium and that of gamma is low. Then penetrating power, its penetrating power is very low, it's medium and it's high. Okay? Speed. 1/10 of speed of light c. Sorry, 1/100th of speed of light. This is 1/10 of speed of light and this is speed of light equal to speed of light c. Energy, this has low energy, this has medium energy and this has very high energy. Okay, how we can find out their energies, how we can recognize which has high, which has low, which has medium, how we can recognize it? Yes, we can recognize it by the way that an alpha particle can be stopped by a piece of paper, whereas the beta particle cannot be stopped by a piece of paper. For this, we have a thick book to stop it. Okay. And for the gamma particle, we must have a lead wall in between the gamma particle and the persons who are working in that area. So these are the factors which we must have to remember to deal with the problems associated with alpha, beta and gamma particles, means radiation or radioactivity. If radioactivity is clear, this thing is clear to you, then we can move for the next one. Then please let me know that is it clear to you? Then we move further. Yes, hurry up. Check it out. If you have any question, then please find out. Otherwise, we'll move further. Yes. Okay. Anybody else? Any question? No question about this? Is it clear to all of you? Okay. Can you tell me that the radiation, the radioactivity is associated with the whole atom or it has nothing to do with the whole atom? It only related to the nucleus. Which is the correct option? The radiation is associated with the whole atom or is it associated only with the nucleus of the atom? Yes, I am waiting for your answer. Hurry up.
Yes. Anybody? No answer. Okay. So the radioactivity is basically associated with the nucleus of the atom because the radiations emitted out from the nucleus. The radioactivity is the effect and the cause is the instability of the atom. And atom is unstable because of the energy, the imbalance in the nucleus, not in the electrons. Okay. So energy, the radioactivity is associated with the nucleus of the atom. All the particles emitted out from the nucleus of the atom. Either they are alpha, beta, or gamma. So I think we have to move for the questions from this point. Okay, we will solve some questions so it will become clear to us that how the questions come and what are the questions. Okay, so I am writing the questions and you can guess your answer first and then I will give you the correct answer. Okay, is this clear? Yes, hurry up. Yes. This was the first MCQ which I asked orally from you, that the nuclear radiation is associated with the whole atom, the nucleus only, the electrons only, or it depends upon the condition. So what would be your answer? It is associated with the nucleus only, nuclear radiation. That's why its name is nuclear radiation, because it is associated with the nucleus and it is random in nature. Means what? Sometimes it emits alpha particles, sometimes they emit beta particles, sometimes they emit gamma particle. Okay, different particles at different times. Now let's have some MCQs. The difficult one, I'm taking the difficult one. Okay, radioactive decay is a dash process. Number one, spontaneous. Number two, random. Number three, continuous. Number four, both one and two. Okay, you have to find out by yourself. Write down your answer with you, or you can tell me what's your opinion. What's the correct option? Yes. Yes, hurry up.
The correct option is fourth one. It is a spontaneous process and it is a random process. Okay. So the correct option is the fourth one. The next one is beta radiations consists of number one, helium nuclei, number two, hydrogen nuclei, number three, electron, number four, positron, number five, both 3 and 4. Yes. What's your opinion? Yes. What's your opinion about the second one? Shabash. Hurry up. No answer. Again. The correct option is the fifth one. Both 3 and 4. Electron and positron. Electron and positron. The correct option is this one. Both electron and positron. So now we move further. We'll move to the second topic of this, the third topic of this unit. And what is that? It is half-life. Now, what we have in half-life? What is the meaning of half-life? Do anybody can understand? इन केस ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की सूरत में तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि इसकी हाफ लाइफ कब हुई, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब चले जाएगा दुनिया से. ठीक है ना? तो एटम में कैसे बता सकते हैं कि ये हाफ लाइफ है, और हाफ लाइफ है क्या चीज, ये दूसरा सवाल है. तो किसी को पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है? यस, शाबाश. हाफ लाइफ. Half life is time required for exactly half atoms of a radioactive element to decay or disintegrate. ओके, ये वो वक्त है जो चाहिए किसको? एग्जैक्टली आधे एटम्स को डिके करने के लिए या डिसइंटीग्रेट करने के लिए, एटम से टूटने के लिए. ठीक है? और ये इसको हम रिप्रेजेंट कर किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ.
इसका सिंबल जो है वो टी हाफ है. इट इज मेयर्ड in seconds. It is given as T half is equals to ln of 2 natural log of 2 divided by lambda, where ln of 2, when you find out by your calculator, you can find it natural log of 2 is 0.693. ln of 2 is 0.693 over lambda. And what is lambda? Lambda is decay constant. It is measured in per second, second inverse. Okay, this is all about half-life. Half-life is the time required for exactly half number of atoms of a radioactive sample to decay or disintegrate from the sample. It is denoted by T half. It is measured in seconds. It is given as T half is equals to natural log of 2 over lambda. When you find out natural log of 2, it becomes 0.693. So it is 0.693 over lambda. Lambda is decay constant and it is measured in per second. Now, there is a difference, a big difference between the different elements as far as half-life is concerned. Half-life of carbon is 5,730 years. That of radon is 3.8 days. So some elements decay very early, very quickly, very fast in a short interval of time, and some other decay in a very long time. यानी आपके पास कोई एलिमेंट है, वो थोड़ी थोड़ी देर में रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है, बार बार डिके कर रहा है, रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है. और उसके अगेंस्ट कोई और एलिमेंट है. मेरे बाबा की घड़ी थी मेरे पास, मेरे घड़ी में कभी से भी कोई रेडिएशन नहीं निकली. अब वो चली आ रही है, तकरीबन 100-125 साल के बाद अचानक उसने रेडिएशन एमिट आउट कर दी. उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, हमें पता ही नहीं था. क्यों? क्योंकि उसकी हाफ लाइफ जो है वो 115 ईयर्स थी. सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना, सबकी अलग अलग होती है हाफ लाइफ, और उसी हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर लैम्डा, और उसी को यूज करते हुए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो अब हमने क्या करना है कि आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रोक रहे हैं, और क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके यहाँ लाइट का इस वक्त इश्यू है, तो हम कल के लिए टाइम को ऐसा डिसाइड करेंगे जहाँ पर हमारे पास लाइट प्रॉपर सब जगह अवेलेबल हो, ताकि बच्चे उस मौके से फ़ायदा उठा सकें. मीनवाइल हम ये करेंगे कि इससे रिलेवेंट जो MCQs हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं आज, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर करता हूँ. तो अपना ख्याल रखिएगा और इन टच रहिएगा, ताकि जो हम नेक्स्ट क्लास लें तो उसमें आप सब मौजूद हों और हम अच्छे तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें और इससे बेनिफिट ले सकें. ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम.